ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। We welcome all of you to today's class on Srimad Bhagavad Gita. We are studying second chapter, verse number 70 onwards. पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि In जो the previous verse, Bhagavan explained that the spiritualist, उसकी रुचि आध्यात्मिक विषयों में ही रहती है। his interest is in spiritual subject matters. लौकिक व्यक्ति हैं, उनकी रुचि Like लौकिक विषयों में। materialists, interest is in materialistic subject matters. Their subject matters are different, their goals are different. That is why जीवनचर्या भी अलग अलग रहती है। their lifestyle is also different. जो उस प्रकार का जीवन बिताता है संयम से, One who lives like that with self-restraint,
like it was explained in the previous verse, that he remains self-restrained in worldly matters. तो संयम जो रखता है विषयों से विचलित नहीं So one who maintains the restraint, he is not disturbed by sense objects. That is what Bhagavan is explaining here. अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कहते हैं कि ट्रांसलेशन, जैसे अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और समुद्र पूर्णतः भरा हुआ होने पर भी अपनी सीमा में स्थिर रहता है, just as various rivers flow into the ocean, which, although completely full, remains immovably fixed within its boundaries, so the sage in whom all enjoyments merge without causing any mental modification attains peace, but not a person who anchors after such enjoyments. So Bhagavan is explaining here that one whose intelligence is not disturbed, it remains stable, is like the ocean. Like in the ocean, various rivers merge from different directions, but the water level of the ocean does not rise. It does not cross its boundary. Similarly, the self-controlled person, one who is Sthita Pragya, he lives in this world and he also engages with the sense objects, but he does not come under the control of sense objects. Those sense objects do not disturb his mind, his intelligence. That's why this person is addressed as Sanyami, self-restrained. Generally, when our mind sees any sense object, like I explained earlier, then desire arises and this desire disturbs our mind. Then we desire to enjoy the sense object, to obtain it, and we endeavor to obtain that, and sometimes we become successful, sometimes we fail in our endeavor, but the mind becomes disturbed and it loses its peace. So here he is explaining how such a spiritualist, he remains stable within himself. It does not undergo any mutation. Just like the ocean, water enters, so much water enters in the ocean, but compared to the ocean, that water entering in the ocean is so little that it cannot disturb the level of the ocean, because the water of the river is also ultimately coming from the ocean only through rainfall. So the ocean maintains its water level. So Bhagavan is giving the secret here for maintaining peace of mind. So one who is kama kami, kama means vishaya, that which we desire, that is called kama. So one who desires that, that person is not in peace. That person runs after sense objects, and the sense objects, they are not stable. कुछ चीजें जो दूर से आपको अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनको आप प्राप्त करते हैं, they appear very beautiful at a far distance, but when we obtain them, then we see that reality is different. We may be attracted to some person and we may live with that person. We may desire that if we have relation with that person, we'll be very happy. But when the relation is actually formed and we live together, then we see that something else is only going on in life. Then we think that why did I get into this relation? I was happier before this relation. So earlier also I was disturbed, now also I am disturbed. That's why Bhagavan is telling here that one who is kama kami, he will never be at peace, because peace of mind is not in some not in karma, it is not in some sense object. Peace is all around us already. Originally, we are peaceful only. Like when a child is born, so then the infant baby
is very dear to उसका मन everyone जो है वो because विषय के his कारण mind शांत is नहीं हुआ, peaceful. इसलिए वो शांत दिखता है और The baby has not engaged with sense objects, so the उसी baby is प्रकार हमारा peaceful. सबका मन That's उसी why the प्रकार baby is शांत है, attractive लेकिन to उसको हमने everyone. अशांत कर That's दिया why our है mind is विषय के also कारण। attractive. शांत Is विषय sorry, के our कारण mind is दिखता also है, originally और कोई peaceful, कारण नहीं है उसको but अशांत it करने का। becomes disturbed only due to sense अशांत enjoyment. करने के और भी कारण होते हैं जिसको आगे अगले श्लोक में There are बताएंगे। other reasons, अभी हमारे factors also अहंकार that की can बढ़ती disturb है, the peace of mind. Bhagavan will हमारी explain that later. इच्छा Like अंत sometimes our में ego बात gets इच्छा attacked, की ही आएगी। but ultimately it is all about कोई desire only. काम हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, कोई When वस्तु anything happens हमारी to इच्छा us के that is अनुसार not नहीं हो according to पाती है, our desire, or we कोई get व्यक्ति something which हमारी is इच्छा के not अनुसार according नहीं to our चलता है, desire, उसी से or अशांति होती some है। person is functioning in मूल life रूप but में इच्छा ही not होती है, according to our और desire. उस इच्छा का आधार जो है वो हमारा अहंकार So ही है, originally the cause is our desire only, क्योंकि and that अहंकार is ही based इसको on भोगता बनाता ahankara, है। चाहे because हम जो भी ahankar makes us the enjoyer. विषय वस्तु प्राप्त करें, Whatever sense तो object उसका we जो may भोग करने obtain, वाला है उसी को तो अहंकार बोलते हैं ना। तो वो अहंकार शांत नहीं हो so the सकता one है, who is doing bhoga of उसको that, उसकी that is ahankara. अपनी इच्छा के And that अनुसार वो ahankara वस्तु will या not पदार्थ या व्यक्ति नहीं मिलता है, क्रिया नहीं be होती है। at peace, because when we do not get any जब तक object हम that is not according to इस our भावना को अपने desire, मन में रखेंगे तब तक so वो as long अशांत as we नहीं will होगा। have this karma within us, this desire क्योंकि within us, we कामना will की not be दूसरी बात यह है peaceful. कि ऐसा नहीं है कि Because आपकी another कामना point पूरी is हो that गई it is not और that उसके बाद our में आप desire got शांत होकर fulfilled रह जाएंगे, and then we will become फिर उसके बाद peaceful. में कोई दूसरी कामना Because after that again there will be another desire. तो एक कामना दूसरी कामना को पैदा करती So है, बीज की one तरह उसी desire बीज gives से वृक्ष होता rise है, to वृक्ष से another फल desire. होते हैं, और इसी प्रकार ये संसार चलता रहता है। क्योंकि Like there कामना is की tree, पूर्ति then the करने के tree लिए gives आप कोई rise to क्रिया seed, then करेंगे seed gives rise to तो tree. उसमें कुछ It नया goes कर्म on like पैदा that in होगा, this world. Because when we क्योंकि fulfill our उस फल को desire, प्राप्त करने के we लिए आपको then अनेक we give क्रियाएं rise करनी to पड़ती another हैं karma. और उन क्रियाओं का भी फल आता Because है। we have to do many activities फिर to उस फल fulfill से the आपको भोगना desire, पड़ेगा, वो फल and जो है that वो will give सुखदायक हो rise to a सकता lot है, of karma दुखदायक हो phala, सकता है, and then we have to suffer वो or हमेशा enjoy ऐसे ही होता रहता that है। karma phala. So always it is like that इसलिए only. भगवान कहते हैं That is why कि Bhagavan is जो telling भोगों की लालसा करता है that उसको कभी भी शांति नहीं होती है, one who desires sense enjoyment, who और hankers after sense enjoyment, will जो never be peaceful. संयमित व्यक्ति है, And जिसकी the बुद्धि प्रतिष्ठित होती self-controlled है, स्थित person, प्रज्ञ है, his उसके buddhi पास भी विषय आएंगे is आनंद के pratisthita, is लिए, established in peace. वो एक He will स्थान पर also बैठा get रहे तो भी कुछ sense ना कुछ objects, विषय even आएंगे, if he is sitting at one place, लेकिन वो he will keep उन विषयों receiving के प्रति sense भागता objects, नहीं है। but he himself will not run after जैसे the sense समुद्र जो है objects. वो नदियों के पीछे नहीं भागता है, Like the नदी ocean स्वयं उसके doesn't run पास after आती the है, rivers, but the उसी rivers प्रकार come to स्थित the प्रज्ञ oceन. व्यक्ति जो है वो Similarly, विषयों की the तरफ Sthita नहीं Pragya दौड़ता है, person, he does not run after विषय sense स्वीकारता है, objects. Sense objects come to लेकिन him. वो उसमें उसी प्रकार समा जाते हैं जैसे समुद्र में नदी समा जाती है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां वो तो भगवान में लगती हैं, वो So भगवान his की तरफ mind, his दौड़ती हैं। intelligence, his हमारी senses दौड़ जो है वो are दो ही तरह engaged हो in the सकती है, seva या of भगवान की Bhagavan. तरफ हो सकती है या संसार की तरफ हो सकती है। तो We संसार can की तरफ either be दौड़ेंगे तो running towards संसार the को कभी world or आपको running रोकने वाला towards नहीं है, Bhagavan. If we जिसको run towards रोकने this आएगा तो वो samsara, आगे the material बढ़ेगा। world, we will not achieve इसलिए that. अद्वैतवादी तो कहते हैं कि है ही नहीं, Nobody has ever achieved that. So Advaitvadis in fact say that there is no कहते हैं कि ये samsara झूठा only. है, अगर होता तो मिलता। If it since it does not तो exist, that's why you don't get वैष्णव it. लोग कहते हैं कि नहीं, But मिथ्या नहीं है, Vaishnavas say that no, the लेकिन samsara is not ये mithya, स्थायी नहीं है, but it is not यहाँ permanent. चिरस्थायी It is not कुछ भी stable. नहीं है। There is और nothing लोग तो stable कहते हैं here. हर क्षण ही हर चीज बदलती रहती है, तो हर क्षण हर The चीज बदलती है तो आपको Buddhists प्राप्त say कैसे that होगी? everything is continuously उसको changing. प्राप्त करने जाओगे जब So तक if कि something क्षण is पर क्षण वो continuously बदलेगी नहीं, changing, how दूसरी do you होगी, attain that? Because कुछ the जैसी by the time आएगी you और attain बढ़ती that, है लेकिन the बदलेगी नहीं। you do not get the original object तो that you वैष्णव लोग desired. कहते हैं कि हाँ बदलती है So लेकिन इतना Vaishnavas भी say that yes, नहीं कि it हर does क्षण ही change, but not that दूसरी हो जाती। every moment it is a different तो object. इसलिए It's वो not कभी like that. आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, और फिर So आप that's why you are जिस not, चीज से प्राप्त you will करने never जा रहे get हैं वो it. भी बदल जाएगी, And आपकी बुद्धि, आपका मन, what आपकी you are इंद्रियां trying to obtain, वो that भी तो that will बदलेंगी। also change, because your उसको mind, आपने your senses, they आकर्षित are also changing. वस्तु समझा
भेजा था, जब वो मिल जाता What तो सोचते थे you बहुत thought अच्छा earlier लगता है, as very कमल बन attractive, गया। now you may not find it attractive because your इसलिए mind has changed. वो कभी शांत नहीं So रहता। that is why it is never at peace. तो शांत कौन होता है, So who is peaceful? उसके लिए भगवान अगला For that, Bhagavan is telling the next verse. तो ये शांति के मंत्र भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। So Bhagavan is giving the secrets विहाय to peace कामान here. सर्वान् सर्वान् पुमांश् शरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को Translation: त्याग the person who, लालसा having छोड़ abandoned all desires, तथा मैं lives और devoid मेरा of hankering भावनाओं and से free मुक्त from होकर the शांति notions of पाए, I and mine, वह परम attains शांति perfect प्राप्त करे। peace. तो यहाँ भगवान So here Bhagavan सार is बात बता रहे हैं। giving the क्योंकि essence, अर्जुन का जो प्रश्न था वो ये था, स्थित because प्रज्ञ Arjuna's चिदाभास question was समाधिस्थस्थ केशव that स्थितिभिः किम प्रभाषेत किम आश्रित व्रजेत। तो यहाँ उसका जो उन्होंने सबसे पहला how जो does a उत्तर दिया sthita pragya behave. So वही वास्तव में यहाँ पर उसका the first answer that Bhagavan gave, वहाँ that कहा same कि answer is giving प्रजहाति here यदा also. कामान There he had सर्वान् told Prajahati yada सर्वान् kaman कामान sarvan. यदा प्रजहाति, वही बात यहाँ कह रहे हैं, विहाय कामान यह Same thing सर्वान्। he is telling here also. तो Vihaya अब हमने जो kaman कहा था yes अंत sarvan. में भी What वही he had कहेंगे told earlier, here also he is कि telling अगर that आपको only. स्थिर रखनी है That if you और have to बुद्धि स्थिर रखने के लिए stabilize अनेक your शब्दों का प्रयोग किया, तो intelligence, समाधिस्थ हो and for जाता है, stabilizing स्थिति हो intelligence जाता है, he used lot of words. प्रतिष्ठित स्थिति हो जाता है, मत पर हो जाता है, युक्त हो जाता है, योगी बन जाता है, आत्मवशी हो जाता है, विधेय आत्मा, राग द्वेष से रहित हो जाता है, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है, संयमी मुनि, So he जो used निष्क्रिय all है, these words, निरहंकार, ये सारे all सब these various words शब्दों का एक ही for अर्थ such a person whose intelligence becomes stable. मूल रूप में कहा था स्थित प्रज्ञ है। इनका कोई What दूसरा he originally referred to as शाब्दिक Sthita अर्थ अलग Pragya. अलग है, लेकिन वास्तव में सबका सार The earth of the एक ही Shabdas है। may be little different, but the जब तक essence आप is same शांत only. नहीं होंगे तब तक आप And सुखी until नहीं हो and सकते। unless ये you उन्होंने become पहले बोल peaceful, you दिया, cannot शांति be से मिलते happy. सुख। That he told earlier जो only. शांत है उसको That सुख if कहाँ a है। person is not peaceful, how can he be तो happy? इसलिए अगर आप देखें That's why तो if भगवान you जो है सुख analyze को महत्व नहीं properly, दे रहे हैं, शांति को Bhagavan is महत्व not दे रहे giving importance to Sukha or हैं। happiness. प्राय He is करके giving सुख importance को to महत्व देते Shanti हैं or कि peace. सुखी होना In चाहिए, our लेकिन life, ये नहीं generally we समझते give कि जब तक importance हमारा to मन happiness, but शांत we do नहीं not होगा तब तक realize हम that सुखी नहीं हो unless सकते। our mind becomes peaceful, we और जब cannot मन become happy. शांत हो जाएगा And when mind तो will सुख become स्वतः ही peaceful, आ जाएगा। then happiness will be क्योंकि achieved सुख कोई automatically. आपसे लाना नहीं, कहीं और से आपको लाना नहीं है। Because you do not have to get Sukha आगे or पांचवें happiness अध्याय from में somewhere भगवान else. बताएंगे कि दो प्रकार के सुख हैं, एक जो बाहर से Later आता in है the वो 5th शांत chapter, वास्तव में Bhagavan आता will नहीं tell है, वो कहीं से that one is the Sukha that भ्रम comes है, from the और एक आपके sense objects, although there is no Sukha आंतरिक in सुख them, that's an illusion जो only. अंत सुख है, And one is अंतरात्मा your अनुभव internal होती है happiness, हमसे। तो Antarik सुख Sukha. शांति सब है पहले से ही, लेकिन So हमारा मन happiness, जब peace are अशांत होता already है तो there, फिर वो सुख हमको but when our mind अनुभव में नहीं becomes आता, हमारे दिमाग में नहीं becomes आता। disturbed, then we जैसे cannot दीवार feel पर the अगर कुछ happiness. लिखा We हुआ है cannot realize the और आपको happiness. पढ़ना है, Like if तो something आपको is written अपने on को the उसकी wall स्थिर and if रखनी you पड़ेगी, have to उसको read तभी तो it, पढ़ेंगे। then you have to अगर आप maintain बस your अपना vision सिर बाएं stable. बाएं Then only घुमाते you रहें can read जल्दी it. जल्दी से, If तो you आप keep पढ़ नहीं shaking सकते। your head, then how will you be able तो to उसी read what प्रकार is से written? शांति है Similarly, पहले से ही, peace is there अशांति को कोई already. पैदा नहीं कर सकता। Nobody can give birth to भगवान ने पहले से peace. ही दिए, Bhagavan has already given that. लेकिन But हमने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, we भगवान की बात नहीं tried मानी to act over smart. और We do हमेशा not एक listen to परम शांति Bhagavan. को ढूंढते Then we घूमा। lost our peace of mind, and now we तो are आप searching बाहर for जितना peace मर्जी ढूंढते outside. रहिए आपको So मिलेगी you can नहीं। keep searching for peace outside as much as you like, but you will never achieve it. आप बाहर सुख को ढूंढते रहिए, वो बाहर मिलने You वाला can नहीं है आपको, keep searching for happiness क्योंकि जो outside, वस्तु but you will जहाँ not है get वहीं तो it. मिलेगी आपको। Because an object, wherever it lies, you will get it जैसे from आपका there पेन only. है, Like you पेन have your चश्मा आपने पहना हुआ pen, है, or let's say you're wearing खो जाता है, spectacles, उसको ढूंढते and रहते हैं, sometimes लेकिन you वो lose आपकी it and you जेब में keep नहीं है। searching for it, and sometimes it happens that it is in your pocket only. तो आप उसको पूरे कमरे में हर जगह ढूंढते घूमिए, So you can keep चश्मा है, searching for चाबी है, that, those spectacles फोन है, or key or तो वो whatever आपको मिलेगा you नहीं, lost in the whole क्योंकि वो room, but है ही you will नहीं। not get that because it is not है ही तो lying वही there. जहाँ आप
you will get it in that place only where you had इस kept it. प्रकार शांति जो है वो आपकी जेब में रखी Similarly, हुई है, peace is lying in your pocket only. हृदय में ही है, It is in your आप heart उसको only, बाहर ढूंढते रहिए तो but वो you नहीं can मिलेगी। keep searching for it outside. You will not get it. अब क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने So now अशांति why we do चारों not तरफ get it? अशांति खड़ी कर दी है। Because we have disturbed our whole लेकिन रात्रि में environment आप also. सोते हैं तो शांति But at night अनुभव when करते we ही नहीं कभी। sleep, that time we तो experience जो peace अनुभव or कर रहे no? हैं शांति, वो कहीं बाहर So से आई है, that peace what we experience किसी during बाहर our के विषय sleep, से पैदा is हुई it है। coming from outside or generated from any कितना sense आनंद आता है, object? आप कहते हैं And मैं how आनंद से much सोया मैं। we enjoy our sleep? We say that we slept very आनंद से तो nicely, तभी सोए ना happily. जब बाहर का सब So you विषय भूल slept गए, happily only बाहर के because विषय में you आसक्ति छोड़ दी, forgot नींद आती है। all your आसक्ति attachments रहेगी, to the external sense स्मृति बनी objects. रहेगी तो नींद नहीं Because आएगी। if you still have memory of those इसलिए उस attachments, then you आसक्ति will को not be able छोड़ना है, to क्योंकि sleep. जागृत अवस्था में तो So विषय you have सब to give up रहेंगे that ही, attachment, because in wakeful लेकिन नींद में state, आसक्ति को all the छोड़ दिया तो उसी को sense मैं objects will हूँ, always be there in मैं front of ब्रह्म you, हूँ, but you have to give up that ऐसा। attachment. That's why Bhagavan is telling here, स्पृह निर्मम, Vihaya kaman yah sarvan. दो शब्दों का प्रयोग So चार he चीजें has कही है यहाँ used, पे। he एक has तो spoken कामना of का four त्याग, things. One is एक giving up स्पृहा का the त्याग, kamana or desire, एक one is ममता giving का up the त्याग, spriha, एक and one अहंकार is का giving त्याग। up the mamata, and one चार is वस्तु, giving up the ahankar. Giving up four तो ये things. चारों एक दूसरे से संबंधित हैं, So all these four ऐसा are नहीं समझे कि ये interconnected चार अलग actually. अलग हैं, It's not that these four are ये all सब एक दूसरे independently से different. संबंधित हैं। They are all connected लेकिन together. कुछ स्थूल हैं, But some are कुछ सूक्ष्म। gross सबसे and सूक्ष्म some are अहंकार है। subtle. The subtlest one is अहंकार ahankar, का तो पता ही नहीं चलता है हमको, because we do not even realize our ahankar. किसी को पता नहीं चलता है We कि don't मेरा even कोई अहंकार identify है। it. Nobody और किसी को realizes that ध्यान he नहीं कि has आप बड़े ahankar अहंकारी within. हैं, If you तो tell वो somebody that कभी you are very proud, कैसे that कहेंगे कि person will अहंकार not है। accept you. He will say that how can you speak like this? तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कभी कभी किसी के मुख में Like I बदबू gave आती है, example that sometimes somebody's mouth तो smells, वो उसको नहीं पता emits चलता, foul दूसरों smell. को पता चलता That है। person cannot दूसरा realize उसके that his मुख mouth के is पास emitting जाएगा foul देखने के smell. लिए, Other person realizes when he comes close to this person लेकिन and उस says समय that उसकी there नाक is lot मुंह के of foul ऊपर लगी smell है, coming from your mouth. 1 इंच भी दूर नहीं है, लेकिन But उसको that नहीं आता, person's उसको nose अनुभव में is नहीं आता। not even at 1 inch distance from the वैसे mouth, ही but still अहंकार he का cannot गुण smell सूक्ष्म it. है। So similarly, ahankara is बदबू तो पृथ्वी very का गुण है ना, subtle. This गंध पृथ्वी का गुण है smell तो is सबसे the स्थूल quality है। of earth, उससे ऊपर which तो जल is है, very अग्नि है, gross. वायु है, Above that आकाश is है, स्थूल water, अहंकार, fire, आकाश से भी सूक्ष्म akash, अहंकार। and ahankara is तो इसका subtler कैसे than पता चलेगा? akasha also. So how कोई can we वस्तु है realize जिसका that हमें पता नहीं चलती है when we cannot प्रकृति। realize smell, तो ये which is इसलिए ये quality सबसे of such a स्थूल है gross तो सबसे बाद substance? में कहा। और अहंकार के कारण फिर ममता होती है, मैं हूँ, ये And due मेरा to है, ahankara, we have मेरा तो mamata. हमेशा ही था, Ahankara is me, and mamata ये is मैं है, ये mine. मेरा This है। is mine. Because wherever तो there मेरा is का तो me, पता there is चलता है something कि that is मेरा mine. स्थूल वस्तु के संबंधित So होता है, जो mine, चीज तो we can बाहर है, जो understand हमको प्राप्त because है, mine is जिसको referring अपना to objects समझना which हुआ are कि ये मेरा outside है, us, and वो understanding that they स्थूल belong वस्तु है। to us, that is mamata. That is gross object. व्यक्ति हो, वस्तु हो, Whether चाहे that कुछ is ना some कुछ person, some हमसे बाहर object, है, or some place, that is all अहंकार तो अपने outside us अंदर ही है, only. But मैं ahankara है। is inside us. तो इसका तो These पता objects चलता are है। outside. So और फिर mamata, we उसके can ऊपर understand स्पृहा। that. And स्पृहा then का above उपयोग that there करते is अपने जीवन के spriha. लिए जिन चीजों की हमको आवश्यकता होती है, Spriha means what उसको our स्पृहा कहते needs for leading our हैं। life. खाना पीना, That सोना, is घर spriha, मकान, like eating, जो जीवन यात्रा के लिए drinking, आहार निद्रा भय, residing. और उससे ऊपर है कामना। And then beyond that is उससे अधिक kamana. चीज की इच्छा करना, वो कामना। Desiring more than what तो we need कामना is called और kamana. स्पृहा जो है वो So अपरांत की kamana and प्राप्ति है, spriha, वो तो that हमारे is पास for अभी है obtaining नहीं, what we don't have. इसलिए वो ज्यादा दिखती हैं। That's why they are क्योंकि जो more चीज पास में visible, रहती है उसका because what थोड़ा we already उस have, पर we ध्यान बन जाता है। don't value it much. We और pay फिर less कोई attention to that. दूर चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, When some तो person उसकी goes याद ज्यादा away, सताती है, he उस पर dies, ध्यान ज्यादा देते हैं। then अगर his आपका उससे memory लगाव नहीं है disturbs us तो more. नहीं है तो फिर If कोई we दूसरा at है। all had mamatva or sense of possessiveness for that तो person, इसलिए जिस चीज की हम कामना करते हैं उस पर ज्यादा केंद्रित that's होते why हैं। those objects for which we have तो kamana, ये our mind is more focused इसका on एक them. क्रम है। So this is a अहंकार सबसे sequence. पहले है,
that first of all there is ahankara, we're born with that, and then we have mamata, then spriha, and then kamana. तो भगवान कहते हैं कि चारों So को Bhagavan छोड़ने is ही शांति telling मिलेगी। that by giving up these four only you will get तो छोड़ने peace. का मतलब पूर्ण रूप से तो छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि So जैसे giving up स्पृहा के means बारे we में do कहा not कि give it हमें जीवन निर्वाह की completely. वस्तुएं, Like for उसकी spriha, इच्छा I है, said that desiring तो those वो तो things हमें which we चाहिए, need for लेकिन sustaining our उसमें life, we need them, आसक्ति ना होना, but not having केवल ऐसा ही attachment भोजन in मिले, them. That I want ऐसा ही this कपड़ा type of मिले, food only, this type of clothing ऐसा ही only, मकान मिले, this type of residence only, ऐसा ही मेरे को पति या or पत्नी या this type पति of मिले, husband or ऐसा ही मेरा wife or पुत्र relative हो, ऐसी only. मेरी पुत्री My हो, son should be like this ये only, or सब daughter बात should है। be like this only. In this way, तो हमें this type of हमारी attachment. कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, So we have some basic fundamental needs in life. Everyone तो has वो that. पूरी करनी है। That लाभो जीवित those have to यावत be fulfilled. कामस्य In न इंद्रिय प्रीति, सूत जी कहते हैं भागवत के दूसरे in अध्याय Srimad में, Bhagavatam, Sut Goswami कामस्य न says इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत, कि कामना इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है, लेकिन जीवन के that लिए this है। kamana desire is उसमें not for जीवन की satisfying आवश्यकता, जिससे senses, आपका जीवन but it चल जाए, should be for sustaining और life, शरीर को चलने के लिए कुछ livelihood. भोजन चाहिए, For कुछ sustaining life, we प्राकृतिक need रोटी, some food, we need some nutrition. स्नेह तो मिल जाए, So if we लेकिन can get that, स्वाद के पीछे ही चलते हैं, but always running कुछ after समस्या taste खड़ी करते only, हैं। then it तो leads to मूल problems. समस्या इसी के कारण होती है कि So many भोजन की problems क्वालिटी, arise because of this स्वाद only, नहीं that ऐसा food is बनता not है, according to our taste, it is like this or like तो that. उससे मन अशांत रहता है। So then it disturbs the peace of mind. तो इसलिए So उसी that is प्रकार why, ममता हमारी similarly, आवश्यकता तो होगी। जैसे भाई कंप्यूटर तो मैं कहता हूँ there मेरा will be some mamata मेरा, also. Like I have this laptop, so I say it is my लेकिन अब laptop. इसी में आसक्ति हो जाए, But if I become टूट attached to जाए, this only, and तो if उसी this में breaks, बैठे it बैठे falls हम रोने down, लगें, then I sit crying, तो उससे अशांति रहेगी। then I will become disturbed. तो इसलिए हमें विशेष तौर So से that भक्ति is मार्ग why, में especially in the काफी path of चीजों की bhakti, आवश्यकता पड़ती है। we हमें need सेवा many करनी है, things ठाकुर जी की for सेवा doing करनी है, seva गुरुओं of की सेवा Bhagavan, करनी है, seva of Guru, भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि seva भक्ति of मार्ग the सेवा का मार्ग है। Vaishnavas, because तो bhakti उसके is a लिए path of seva. सेवा उपयोगी पदार्थों की भी आवश्यकता So for पड़ती है, doing seva, you need objects और उनकी हमको रक्षा भी करनी instrumental है। to doing seva, and then तो we यही have to बात also कहते हैं maintain and संत protect महात्मा, those objects, but with the understanding that they belong to Bhagavan, जो कि वास्तविकता है। which is actually मैं भी the fact भगवान का also. हूँ, इसलिए हमें I दास, also belong to Bhagavan. दास कहते हैं, भगवान का So दास that's कहते हैं, why I say that I am a और जितना Dasa. मेरा भी है वो भी भगवान का ही है। And then whatever तो I ये have, that भाव also जब आ belongs to जाएगा कि मैं ही Bhagavan. निरहंकार So निर्मम, when we get this bhava, मेरा ये this अहंकार is तो रहेगा कि मैं nirahankara, this is भगवान का दास nirmama. हूँ, मैं गुरु का Of course, शिष्य I हूँ, will have this ahankara that I am ये कर्म disciple of अहंकार है, लेकिन my वो सब guru, I am dasa of वो Bhagavan. भगवान All रहेंगे। these ahankaras are there, they will be और remaining, but they all should be, कर्मयोग their मार्ग में fundamental आगे बढ़े ahankara is तो all भगवान related to मार्ग Bhagavan अलग only. है, लेकिन In karma and jnana path, इस प्रकार ahankara is different, और but स्पृहा in भी bhakti it इसलिए is है कि like this. भगवान का प्रसाद हमको And प्राप्त then हो रहा है, the हमने spriha पाया है, should be that I am receiving the हमको prasada सेवा of Bhagavan, उससे I अधिक honor करनी the है, जो भी prasad, हम and ग्रहण then करते I हैं, do कामना seva of करते हैं, जो भी Bhagavan. सेवा संबंधी More वस्तुएं than हैं, that, we should not have kamana तो or जब ऐसा desire. If करेंगे at all तो we should have, they व्यक्ति should को be मन related to शांत seva of रहेगा। Bhagavan. So if we can have और this framework in our उसकी life, अगर then we अशांति will होगी be तो always भगवत peaceful. संबंधी अशांति And होगी, even उसमें भी if एक we आनंद आता है। lose peace, that will also be जैसे related आप to भगवत Bhagavan. That वृंदावन disturbance भक्तों will की also be सेवा related to Bhagavan only. लगता है कि Like we ये hear तो in the परम Leelas सुंदर of भाषा है, Bhagavan's associates, तो यहाँ many times we may feel शांति that भक्ति they मार्ग are में अलग not प्रकार peaceful, की they are है, योग disturbed. मार्ग में अलग But प्रकार in की Bhakti है, Marga, peace is कर्म मार्ग of में अलग something प्रकार की different. है। In Karma and Jnana Yoga तो इसको भी Marga, हमको peace is समझना है, different. So we have to understand that क्योंकि अगर also. हमारी Because इच्छा है भगवान की सेवा if करने की, our गुरुओं की desire सेवा is करने to की, do तो वो भी seva एक of इच्छा होगी, Guru, और इच्छा के Bhagavan, कारण फिर that is also a करना desire. पड़ेगा, और And to उसमें fulfill that स्पृहा desire, we will have to do प्रिया some भी करनी activities, पड़ेगी, we तो have उसमें to भी have to get अशांति some आएगी। objects, we will have to लेकिन do वो action. उस प्रकार So की then in अशांति that also there will be रहेगी, some disturbance of mind, but that वो भी एक disturbance शांति का ही will रूप है। not bring misery. That disturbance is तो also a उसमें kind of आनंद peace आता है, only. वो भौतिक And that अशांति नहीं है, disturbance brings lot of वो bliss. आध्यात्मिक है। It is not material disturbance. तो It is इसको भी spiritual. समझना है। So we have to understand और that also. कभी हम भक्तों को And भी देखते हैं कि वो भी आपस sometimes we में see devotees ईर्ष्या also करते हैं, झगड़ा that करते हैं, they ऐसा करते envy हैं। each other, मैं सिद्ध they भक्तों की fight बात नहीं against कर रहा हूँ, each जो कि other. भगवान
प्रीति के लिए करते हैं, लेकिन ये ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब I'm not talking about the perfected devotees. They are always working for pleasure of Bhagavan. But some devotees who are working for their own pleasure, actually. So then among such devotees, relation may get spoiled. पति चाहता है कि पत्नी जो है मेरे It may happen in family also, और पत्नी चाहती है that कि पति husband मेरी इच्छा may अनुसार want that wife should function for my pleasure. Wife दोनों thinks अलग that अलग husband मतलब should हैं, function for my pleasure. Both have different minds. और अगर दोनों And भक्त नहीं है if both are तो not उनके अलग अलग devotees, प्रयोजन भी हो सकते हैं, then they may have तो उसमें फिर झगड़ा different होगा। goals also. Then there will be fighting. तो इसलिए So that is why पति पत्नी और ये पुरुष स्त्री husband, दोनों के wife, स्वभाव man, woman, their प्रभाव swabhava, their nature, अलग अलग हैं, their inclinations, they are different. दोनों का मेल खाता नहीं है, They do not match each other always. शरीर अलग है, Bodies मन are अलग है, also शरीर different, क्या है, ये minds are मच्छर also तो होता है different, शरीर, because body is ultimately a product of mind शरीर की only. बनावट The जिसका जैसा शरीर formation होता of है body, उसके कारण what one is getting, कर्म that was according to his mental कर्म state से only. फल बनता है, तो अलग अलग है, इसका मतलब उनकी मानसिक स्थिति अलग ही है ना, And that mental state formed according तो to his दोनों को एक karmas. साथ रहना है तो कुछ So their समझौता minds करना are पड़ेगा, different. So if they have to live together, they have to live with ऐसा तो संभव adjustment, नहीं है कि वो some दूसरा भी अपने विचार से compromises. चले पूरा, It's not that you expect the other person प्रयास will करेगा always live तो, according to your desire. लेकिन कुछ तो कहीं तो झुकना ही पड़ेगा ना दोनों But को, और अगर both हम have to झुकेंगे bend नहीं little bit. Both have to तो लड़ते adjust रहेंगे, अशांत according रहेंगे, to the other person little bit. तो Otherwise, ये always there will be इसलिए disturbance and fighting. वर्णाश्रम धर्म में जो That is लिखा why है कि in Varnashrama what is said that एक दूसरे का आदर करना, we should गुरु respect का each आदर other, करना, माता should पिता का respect the आदर guru, करना, respect the आज्ञाकारी parents, होना, be obedient इसका to उद्देश्य इतना parents. ही है कि जब What आप is the भक्ति purpose मार्ग of में that? आएंगे The purpose तो is that आपके when लिए you will enter the bhakti marga, सहूलियत है, फिर it आपके will लिए be आसान easy हो for जाएगा you to कि आप surrender, भगवान को, गुरु को कैसे and समर्पित it हो will be सकते easy हैं, for you पहले to से become उसकी आदत है। obedient to Bhagavan, to Guru, because you have already been आज trained जो like that सिखाया since जाता है childhood. Nowadays, वो what सब is taught to स्वतंत्र है, children that we are all तो उसमें फिर independent, कभी we are शांति आने free. वाली नहीं, So, with that kind जब of तक आप ये सोचते रहोगे teaching, कि मैं you can स्वतंत्र never हूँ become और peaceful. मैं अपने लिए ही हूँ, If you are living तो आप independently and अशांत only living रहेंगे, for yourself, दूसरों को भी then you अशांत will रखेंगे, always remain disturbed and you will इसलिए disturb आजकल others संबंध also. That is why बनते नहीं हैं, nowadays relations कहीं are कहीं not पे stable, relations are not formed, विवाह विच्छेद हो जाता है, mostly and marriages end up उसका in मूल कारण divorce. यही है कि अपना अहंकार So रहता है, the reason is that we stick और to our अहंकार own के कारण ही ahankara सारी क्रियाएं होती हैं, and all perform all activities इसलिए based on इस our प्रकार material ego. तो इसको हमें समझना पड़ेगा So we have to कि understand किस this तरह से properly, that how हमें संसार में चलना है, क्योंकि we भगवान यहाँ should बैठने perform की बात नहीं our कर रहे हैं, activities in the यहाँ पे samsara, कहते हैं पुमांग because चरति, Bhagavan is not talking about sitting here. जैसे कि He वेद is में कहते हैं telling चराई Pumangs वेति Charati. चराई वेति, Like in Veda it चरण is रज said बदन Charai Veti. विंदति, तो चलते रहो, तो That keep क्रियाशील होने moving, के लिए, that क्योंकि always remain active. हम मनुष्य हैं, Because क्रियाशील we हैं, are human और beings, क्रिया की we are शक्ति active. भगवान ने हमको दी है, And Bhagavan has तो given हम the भी Kriya Shakti, पत्थर बन the के नहीं बैठ energy of सकते, performing action. So we cannot just तो sit like इसलिए a वहाँ इस stone. प्रकार की समाधि लगा के बैठने की बात नहीं कर रहे हैं कि That's आप why Bhagavan is not talking समाधि of होगी sitting तब in तक Yoga समाधि में Samadhi. बैठोगे, आपको भी Because how long will you sit in शारीरिक Yoga क्रिया के लिए तो Samadhi? उठना ही पड़ेगा, At least for your bodily functions, you will इसलिए have to भगवान arise. उस मार्ग को नहीं बताते हैं, That's why तो ये Bhagavan उसके is कर्म not speaking संन्यास of है, that कर्म path. योगो विशिष्यते, आगे 5वें अध्याय में कहते In हैं the 5th chapter, he will कि speak कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है, that Karma Yoga is better than तो Karma यहाँ भी ऐसा Sannyas. कहते हैं कि Here also, he is सरति speaking like that only. निष्प्रिय, कि आप चलिए क्रिया That कीजिए, कर्म you कीजिए, move, लेकिन perform उस कर्म action, में आप but बंधिए मत, don't become bound to that action. और बंधन जो है वो इन्हीं से है, ममत्व से। And bondage happens by तो this अर्जुन mamatva, sense of की जो possessiveness. समस्या खड़ी हुई थी So the आरंभ में, problem that Arjun was facing earlier, वो इसी अहंता और ममता से ही हुई थी, that was due to this ahamta and mamata, me and mine जब concept. सोचने लगा कि When he ये started सब मेरे thinking संबंधी हैं that these are all my relatives और मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ,
and I am a religious person. कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ I am a dharmic और ये person, सब मेरे हैं, and तो मैं these उनसे people युद्ध all कैसे belong कर to सकता me. How can I fight against them? हूँ? तो इसी को लेकर वो विचलित हो गया था, Regarding this only, he had वो become अपना उपदेश disturbed, करने लगा and then he started कि इनसे युद्ध करने से lecturing अधर्म होगा, that if I स्वर्ग नहीं fight, जाएंगे, there will be स्त्री पुरुष adharma, नहीं irreligion, we will go to hell, कुल धर्म, the जाति women will धर्म become polluted, सब our kula dharma, jati नष्ट हो dharma, जाएंगे, they will all get destroyed. तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। That's why we तो should उसको not ये fight. मोह पैदा हो गया था So he got into this moha delusion, और ममता के कारण मोह पैदा and हो due to गया। mamata, due to his sense of possessiveness, a person becomes deluded. जब किसी चीज में ममत्व हो जाता When है we have the sense of तो हमारी proprietorship बुद्धि or उसी में possessiveness to संकुचित हो जाती something, है, then our और intelligence जब बुद्धि gets संकुचित हो narrowed जाती down, है तो restricted to that only. उसी के अनुसार फिर आपकी And when विचारधारा intelligence बदल becomes जाती है। restricted, then our तो अर्जुन की thinking बुद्धि also changes, our जब thought process changes. उस ममत्व में फंस गई So when Arjun's तो वो intelligence अपने धर्म got को भूल stuck गया। in that possessiveness, he forgot his own तो इस dharma. अहंकार और ममत्व को फिर उसने So कामना this क्या ahamkara की थी, and this युद्ध नहीं mamatva, करूंगा। then what he did, he desired not to तो fight. इसलिए भगवान जब उपदेश देते हैं गीता में That's why in Gita, when Bhagavan is तो teaching, सबसे पहले first of all, उनका उपदेश होता है सांख्य, his teaching is about Sankhya, प्रकृति पुरुष का विवेक। सांख्य the ये sense बताता of है discrimination कि आप between शरीर में Prakriti and निराकार हो, Purusha. Sankhya teaches that we are ताकि आपको पता चले not कि the आप body, कौन है। we are Atma, so that और we उसके बाद understand में that फिर who are we. कर्म योग का उपदेश And देते after हैं that also, कि then आपकी Bhagavan teaches कामना जो about है वो Karma Yoga, गलत है, that your आपको ठीक desire से is करना wrong. है। Whatever you are तो desiring, दो it is not विभाग correct. इसलिए वो करते हैं That's why he makes two ताकि divisions उपदेश जब भगवान in 11वें the श्लोक से चालू in करते Bhagavad हैं, Gita, when he begins with 11वें the श्लोक से 11th 23वें verse to till the 33rd 33वां verse. ऐसा है। तो 11 से 30 श्लोक तक From verse 11 to verse 30, सत और असत, पुरुष प्रकृति या शरीर शरीरी, इसका विवेक वो बताते हैं। he talks about the sense of और discrimination उसके बाद between में Sat, फिर Asat, जो कहता Prakriti, था मैं युद्ध Purush, नहीं करूंगा, the body कर्तव्य and या Atma. कर्तव्य, मोह के बाद में फिर Then युद्ध Arjun had told करने that का I will विवेक not बताया। fight. क्या After करना when we चाहिए, become करना चाहिए, deluded, we उसको lose our आपको sense of समझता है कि discrimination करना between चाहिए, what उसको we should करना do भी and what we चाहिए। should not do. What is इसके our लिए फिर duty, we feel आप like not doing it, हमेशा आते and what वेद we should शास्त्र not do, we वेद feel like पुस्तक doing का it. अनुसरण। तो फिर वो बुद्धि से विवेक की बात करते हैं, तो Then इसलिए Bhagavan बुद्धि पर teaches ध्यान about दिया उन्होंने, buddhi, sense of क्योंकि discrimination. That's why he दो placed प्रकार so का much emphasis मोह on है, एक buddhi, अहमता because ममता there का are और two एक types of कर्तव्य का। delusion. One is about और जब क्या ahamta and mamata, एक तो अहमता ममता के me and कारण mine, मोह पैदा that हुआ, delusion, and the other one उससे फिर is मेरा क्या due to कर्तव्य क्या है kartavya and इसके akartavya, कारण that is what is my duty इसलिए and वो what is not कहता my है कि मैं duty, युद्ध नहीं getting करना, deluded about मुझे that. युद्ध करना चाहिए That's कि why नहीं करना Arjun चाहिए। was speaking that I do not even understand whether I should fight or not fight. तो उसके लिए फिर दो प्रकार से So that's why, भगवान उसको शिक्षा देते हैं। because of these two तो types of यही विषय जो delusions, है आगे Bhagavan तक चलेगा, taught in two ways, तीसरे चौथे पांचवें अध्याय and में this चलेगा। topic will इसको continue समझना till the fifth chapter बहुत also, आवश्यक है, because this is very important to understand. क्योंकि जब कर्मयोग की बात Because सुनते हैं तो उसमें when ये we ऐसा hear लगता है जैसे about भगवान Karma कर्म Yoga, संन्यास की we बात कर feel रहे हैं। as if Bhagavan is talking about Karma और Sannyas. उससे पहले जो सांख्य योग या ज्ञान योग And की before बात है तो that, ऐसा लगता ही है when कि he जब मैं spoke of शरीर नहीं Sankhya हूँ, and मैं Jnana, आत्मा हूँ, तो मेरे को क्या करना then we feel है। that if we तो are not the इसलिए body, if we are उसके Atma, ऊपर जो why at all we ध्यान need to आती do है anything? उसका फिर So भगवान then आगे we get the उल्लेख whatever doubts will arise from these ये teachings, Bhagavan will clarify them later. अपने शिक्षा का यहाँ पर वो सार बात बताते हैं So श्लोक में, here यहाँ he is मानो giving the essence of his teaching in this chapter. निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। शांति की बात यहाँ भी की, Here also he is talking about peace. Earlier he also spoke about peace. Later also he will speak about peace. Till 3 to 4 chapters he will speak about peace. स शांति मापनोति न काम कामी शांति मधिगच्छति। तो ये आवश्यक है इसको समझना। So it is important to understand this, because in our daily life we face these problems regularly.
So we should deliberate on them and how we have to imbibe them in our life. These teachings, how they should be imbibed in our life. We have to understand that first, and then we have to practice applying them in our life. These teachings are based for our benefit, for our advancement. Now the last verse of this chapter. कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, Translation: O Partha, this is the God realized state. Having reached it, one is never deluded. Being established in this state, even at the time of death, one attains liberation in Brahman, that is the state of unconditional being in association with Parabrahman. तो इस सब का परिणाम क्या होगा? So what is the result of all this? Whatever Bhagavan has taught here, he is explaining that here, that this desire, spriha, kamana, ahankar and mamata, if we give them up, then what will be our, what will we achieve? Will there be any loss? Will we lose everything? No. So here Bhagavan is explaining this situation will be Brahmi Sthiti, means Brahma Prapak Sthiti, meaning that with this, here Brahma is a general word. It is used for Paramatma, Brahman, Bhagavan, everyone. Vaikuntha Dham. So whatever is the ultimate spiritual position, whether you talk about Preeti or Moksha or whatever, they all are indicated with this word, Brahmi Sthiti. This is the situation, what he explained earlier, that Shanti or peace is the Brahmi Sthiti. Because as long as your prarabdha is there, you have to live in this body. So living in this body also, you can become a Jivan Mukta. So Brahmi Sthiti means Jivan Mukta. And then giving up the body, we get Brahma Nirvana. So he has used two words, Brahmi Sthiti and Brahma Nirvana. Brahma Nirvana means the state of moksha or liberation, meaning that you will not be reborn. You will attain that state, which is without birth and death. So achieving this state of Brahmi Sthiti, you will not become deluded. Your buddhi, your intelligence will not fall into delusion again. You will not be doubtful about your duties, what you should do, what you should not do. Everything will be clear to you regarding your own life. What is life? What is the goal of life? Everything will become clear to you. Because we have lot of doubts in our mind. All those doubts will go away. The purpose for which we got this life, that purpose will be achieved. So actually, Bhagavan's teaching is getting completed in this verse only. First chapter was about explaining the problem, that what is the problem in human life actually. And in the second chapter, he is giving the solution to the problems of human life. All the other chapters are nothing but expanded explanation of this chapter only. But actually, the solution to the problems explained in chapter 1 have been given here. So then you can do a mapping of what problems Arjun spoke of in first chapter and what solutions Bhagavan gives in second chapter. So if you can understand these two chapters properly, then you can easily follow what Bhagavan explains from third chapter onwards also. Then Gita will become clear to you that why Bhagavan is speaking like this, regarding what is Arjuna having doubts. Then Bhagavan will speak about himself also, because till now he spoke of Brahmi Sthiti. But Brahmi Sthiti is just one Shabda, but what it is? Later he will speak of Brahmano hi Pratisthaham, that I am the Pratishtha, the Adhar of Brahma.
Because when we speak of Brahma, then then people think only of the Nirakar, formless Brahman. But Bhagavan will explain more that how do we achieve that state. सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कहते हैं भक्ति योग इसका So he सबसे speaks of Bhakti Yoga, that उत्कृष्ट Bhakti Yoga is और the सरल उपाय है। topmost इसके and बारे में आगे easiest सब चर्चा process चलेगी, for लेकिन this. मूल जो सिद्धांत की बात So है all the discussion will happen later, कह दी है। but here he has spoken of the तो इसलिए foundational वो कहते हैं कि Siddhanta. अब So उसको that's मोह why he प्राप्त is नहीं telling होगा, that such a क्योंकि person मोह किससे will प्राप्त not be होता है? deluded again. अहंकार। Because what gives अहंकार rise to मतलब भौतिक delusion, वस्तुओं को, that is शरीर को Ahankara. लेके अहंकार, Ahankara here refers to material और ego फिर that is related to the भौतिक वस्तुओं body, में ममत्व पैदा करना, and यही then ये it दो चीजें gives मोह rise पैदा to करती हैं। possessiveness जितना in भी material मोह होता objects. है हमको, All the moha, वो इन्हीं से delusion होता that है। we have, it is due to लेकिन this जब वो इन only. दोनों से अलग हो गया है, But ब्रह्म because स्थिति में आ we गया है, have तो become different, एनाम separated प्राप्य विमुह्यति, तो from एनाम that, ऐसा मतलब ये स्थिति, इसको प्राप्त करके उसको अब कोई so मोह achieving नहीं this होगा। state, this Brahmi sthiti state, the person और will not be स्थित्वा deluded again. अस्यामंत काले भी। तो अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि इसको So this question may कब be प्राप्त raised करना है? that मरने से when 5 साल पहले, do 10 we साल have to पहले, achieve this? बचपन 5 में, years before death, युवावस्था 10 में। years before death, in तो भगवान कहते childhood, हैं कि in जभी भी ये adulthood, प्राप्त हो when? जाए, अगर So अंतिम Bhagavan is क्षण में भी telling, प्राप्त हो जाए, whenever you achieve this state, even if तो you भी achieve आपका this कल्याण हो state जाएगा। in the last moment of your फिर life, कहेंगे still यम यम your वापस life will become जगते auspicious. कलेवर। तो इसको अगर कोई साधना से अंतिम क्षण में भी प्राप्त कर लेता है, तो वो भी If काले somebody आप ही gets ब्रह्म this निर्वाण state विच्छति, तो वो by ब्रह्म sadhana निर्वाण को and प्राप्त होगा। time also, तो आप ही then का he will मतलब है इसको achieve पहले प्राप्त कर liberation. लिया, वो तो होगा ही, लेकिन अगर अंतिम क्षण में भी ये प्राप्त हो जाती है, So now तो we can anyway get it, but even if you get it at the last moment of your life, you will achieve that state. इसमें द्वितीय अध्याय में कथा आती है, एक राजा, क्या नाम था उनका, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में, जो देवताओं के लिए युद्ध करने गया था, खटवांग, खटवांग, राजा खटवांग। So in Bhagavatam there is the mention of तो जब उनका King युद्ध समाप्त हो Khatwang गया, when he had gone to असुरों assist को the पराजित कर दिया, devatas तो in the battle, देवताओं and ने when the कहा battle कि was अब over आपका and they कार्य defeated the समाप्त हो गया, हम asuras, आपसे the devatas प्रसन्न said हैं, that your job is done now and अब we are मुझसे very कोई वर pleased with मांग you. लीजिए। Please ask for some तो benediction. उन्होंने कहा कि मैं वर So तो बाद Khatwang में said that मांगूंगा, I पहले will मेरे को ask ये for बताइए benediction later. कि मेरा First, अभी please tell जीवन me कितना शेष that है। how much of my life is remaining. तो देवताओं ने बोला कि आपका So जीवन तो then the devatas अभी said जल्दी समाप्त that होने वाला है, ज्यादा your नहीं life है, is going to end आज very 10 मिनट soon. ही है। Maybe some 5 or 10 minutes are उन्होंने कहा remaining. फिर मेरे को वर की कोई Then जरूरत नहीं है, Khatwang said मेरे को that I do जल्दी not से need अपने any पृथ्वी पर पहुंचा benediction. दो, Please send ऐसा me इंतजाम quickly करो कि मैं to तुरंत earth पृथ्वी पर पहुंच जाऊं, मेरे को कोई and make मेहनत such नहीं है। arrangement that I should immediately तो reach तुरंत earth. पृथ्वी पर आके And भगवान के immediately ध्यान he में बैठ reached के there and he परम sat पद को प्राप्त किया। meditating on Bhagavan and he achieved the तो इसलिए ultimate कहते हैं कि destination. अंत काल में स्थित्वा That's why it अस्याम is said अंत काले that ब्रह्म in the निर्वाणम गच्छति, तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। in the end also, if a person achieves क्योंकि this state, he will जो achieve Brahma Nirvana. भाव होता है उसी से आपकी अगला शरीर मिलता है, अगला जन्म मिलता है। Because we तो get the अगर next हम body, next birth, निर्मम according to निरंकार our हो state गए, of mind at the last तो moment. फिर आगे आपको कोई So भौतिक if we शरीर have नहीं become free from असली this निर्वाण, material ahankara and यानी कि अब possessiveness, आपकी कोई then we भौतिक do क्रिया not नहीं get होगी। another birth. निर्वाण शब्द Here कभी nirvana means we will not हिंदू लोग भी करते perform हैं, any material action निर्वाण again. कहते हैं, Buddhists also use this term तो यहाँ nirvana. ब्रह्म निर्वाण शब्द So का here प्रयोग the किया word है that कि is used is Brahma Nirvana. निर्वाण शब्द का मोक्ष अर्थ भी होता है, Nirvana means moksha भगवत also, प्राप्ति भी होता है, तो उसको आप attaining प्राप्त हो Bhagavan जाएंगे। also. So you will attain तो that इसी के state. साथ ये अध्याय With समाप्त this, होता है। the second chapter इस अध्याय ends में here, and 72 श्लोक हैं this chapter has और 72 verses, भगवान की शिक्षा जो है वो and 11वें श्लोक से Bhagavan's आरंभ होती है। teaching started from बाकी verse अर्थ 11.
because Arjuna समस्या में था, was in lot of उसी के लिए सब प्रयोग anxiety. धर्म सम्मूढ़ चेता। सम्मूढ़ का मतलब जो मोहित हो गया था, उसका चित्त, He उसकी was बुद्धि deluded, मोहित थी sammudha. धर्म के विषय में। धर्म माने In हमको क्या respect, in करना है, subject matter of कर्म dharma, कर्म को भी he was जानना है, deluded. Dharma is karma क्या also. करना है ना So he did करना not है, इसलिए understand उसको what he क्या करना चाहिए should था, do and what he should not do. कर्मों करियो यदवा जये में यदि वानो जये। कि हमको ये भी पता नहीं है कि कौन सा अच्छा है, So we don't even know what is हम good जीते for ना us, जीते, लड़े ना लड़े, whether winning is good or तो losing is good, उस fighting is good or हमने not भगवान fighting की is good. शरणागति प्राप्त की। शिष्य अस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। So he और took shelter भगवान of से कहा कि शादी माम, शादी माम माने मेरे को शिक्षा दीजिए। mom that please instruct me. तब भगवान शिक्षा देना आरंभ करते हैं। Then और इसमें Bhagavan जैसा मैंने starts कहा दो teaching. ही मूल विषय हैं, एक And सांख्य as I said, it has two main प्रकृति subjects. पुरुष विवेक, One जो is कि हर Sankhya, that मार्ग is में the इसकी आवश्यकता discrimination है। between Prakriti and वास्तव में Purusha, यहाँ जो शिक्षा which is दी गई required in every है, ये path. चाहे आप Actually, कर्म what is taught here in second chapter, whether it is about Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga सब Yoga, में सामान्य है। in all the ये paths, इस ज्ञान this teaching is सबके लिए equally सामान्य है। applicable. जो भी This आपका is मार्ग है, universally किसी भी applicable knowledge, आध्यात्मिक मार्ग second में chapter. इसकी In any spiritual path, आवश्यकता है। ये तो होना ही चाहिए, the इसके बगैर teachings of प्रयाण second नहीं chapter होगा। are needed. And वास्तव if क्योंकि बहुत somebody से is लोग not बड़ा following this स्पिरिचुअल second बोलते हैं, chapter, स्पिरिचुअल है, then he is actually not following any path of spirituality. स्पिरिचुअल पाथ, तो लोगों को Nowadays, पता many नहीं है people say स्पिरिचुअल that we पाथ क्या follow है, this and this spiritual path, but they do not understand what तो spirituality actually आध्यात्मिक मार्ग means. का ये आधार है So, this second chapter is the foundation of और spirituality, इसके ऊपर सब खड़ा है। and everything is built चाहे up on आपका this कर्म only. योग है, चाहे ज्ञान Whether योग it है, is चाहे Karma भक्ति योग Yoga, है, चाहे Jnana Yoga, अष्टांग योग Bhakti है, Yoga, ये Ashtanga Yoga, चार ही or मुख्य योग whatever, हैं। these four are कर्म योग भी fundamental. है, Sometimes अष्टांग we योग, say ज्ञान three योग, also. भक्ति योग। Ashtanga is is अभी अगर आप included in Jnana देखेंगे also. संसार में जितने भी So if you see in this आध्यात्मिक world, मार्ग हैं, all उनमें ये the चार spiritual कैटेगरियां paths, आएंगी। they can तो fall, उनमें ये be classified broadly into these four सामान्य categories कॉमन of नॉलेज karma, jnana, इसके लिए ashtanga, उपयोगी and है। bhakti. So this इसमें second chapter's teachings are दूसरा अध्याय equally applicable in all those yogas. उपयोगी है। It is equal, it is useful, आगे beneficial for ज्ञान every योग की कुछ person. चर्चा करेंगे, कर्म Later योग he की, will speak something ज्ञान about की, Jnana Yoga also, आगे Karma Yoga करेंगे और also, विस्तार से करेंगे। and he और will speak भक्ति in योग की, detail. तो उनमें फिर कुछ भेद And होगा then he'll भक्ति speak योग about में, Bhakti ज्ञान Yoga योग में, also. कर्म योग Then में। there will be some लेकिन ये differentiation between Bhakti, आधारभूत Jnana, है, Karma. But बहुत ही this बार second बार chapter दोहराएंगे। is the foundation of all those प्रकृति yogas. पुरुष में अंतर तो जानना ही पड़ेगा। If कर्म you योग want करना to हो कैसे, practice any type of पुरुषार्थ कैसे spirituality, करेंगे आप। you must know the difference between श्राद्ध कैसे Prakriti and किया जाता है, अगर Purusha. शरीर ही हम है चार्वाक के मत के अनुसार, तो फिर उसमें श्राद्ध तो आता ही नहीं, पुनर्जन्म नहीं आएगा, कर्म का सिद्धांत ही फेल हो जाएगा, तो कर्मयोग कहाँ से आएगा, स्वर्ग प्राप्ति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसी के साथ आज का प्रवचन So with समाप्त this होता we है। will stop here, and ये द्वितीय अध्याय पूरा हो गया। next question, psychologically, how does a devotee deal with the fact that they are always outsiders in material society? भौतिक समाज में आउटसाइडर्स की तरह हैं। मतलब क्या हुआ आउटसाइडर की तरह? So question, what do you mean when you say you are an outsider in material society? मैं बोलो, इंग्लिश में बोलो, मैं तो जानना चाह रहा हूँ ना कि आउटसाइडर का मतलब क्या है। What do you mean by outsider? What does it mean, outsider? आपका अपना अहंकार बदलना है। You have to change your ahankara. इसमें आउटसाइडर और इनसाइडर। So what is outsider and insider in that? You are a human being. और आपका अपना अहंकार है। You have your own ahankara. You have your own identity. तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान So का you दास should हूँ। change your identity. आउटसाइडर क्या आएगा? That you are a Dasa or Bhakta of Bhagavan. So what is outsider in that? आंतरिक स्थिति को बदल लेते हैं। If you are changing your internal state, what is outsider in that? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।